Okay. Am I visible now? Yes, now I am. I was just getting a little lazy to open it in the other window, but good that I did. A very good evening to all of you. How are we today? All right, so you got enough time to prepare for yourself. Rankers Prime 2.0, that's your first Kahoot that you're appearing. I hope you have read the instructions on how to do the Kahoot. You have to go to www.kahoot.it. It is going to ask you for your name or a nickname. It is going to ask you for a pin. You enter the pin 1309623. It is very simple. You can use split screen in your phone. You can use two digital devices, one phone, other phone, one laptop, other phone, one tab, other phone, laptop, phone, tab, whatever you want. A very good evening to all of you. Okay. So are we ready to go? So I've got chota sa quiz for you. 35 questions. Quick 35 questions. We'll give 1 minute each and 35 minutes will be done. वर्षा कोशिश तो पूरी यही करिए कि आज कोई गड़बड़ नहीं होगी. वो क्या कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान. आजकल मैं हिंदी पढ़ रही हूँ. You can't download the DPPs. You have to practice them live. The only point of giving them is to practice them live, beta. Show pin I've shared 1309623. You want, I can pin it for you also. So this is the message pinned. All right, so let's get going. Wait. One, two, three. Ta-da! I hope now it's clearly visible and audible. We can start with the quiz. All right then, let's get going. Start. मैं check भी कर लेना सच में सही कहा है ना. So here we shoot with the first question, darlings. So you can see the image. Identify. बेटा D is not the longest cell ना, वो तो spindle shaped cell था, trachea type का था. हमें incorrect statement बतानी थी. Which of the following statement is incorrect regarding the same? ठीक है, Karan, you have to join in by going to www.kahoot.in. It. चले आगे. All right, next. Kanish पहले से ही बैठा हुआ. Okay. Which of the following is not correctly matched with this contribution? So they are the name of the scientists and what they discovered or what they did not discover, what is mentioned here. All right, let's see. Very good. Singer and Nicholson gave fluid mosaic model. देखो श्वान ने सेल थ्योरी दी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, पैलेट ने राइबोसोम्स दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था, लिपोप्रोटीन बायोलैब मॉडल तो डैनिली डैप्सन ने दिया था, जिसको हमने बोला था कि वो सैंडविच मॉडल है, राइट? ओके, नेक्स्ट. Cell theory was given by. Now,
पिछले क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना एंड प्लीज मार्क द राइट आंसर. टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फटाफट खत्म हो जाएगा. वेरी गुड. शेल्डन एंड शॉन जॉइंटली, बिकॉज दोनों की अपनी अपनी डिस्कवरीज थी एंड उन्होंने एक साथ मिलकर ये दी थी एंड इट वाज मॉडिफाइड बाय somebody else. उस पे भी क्वेश्चन है तो हम वो नहीं बताएंगे आज. मैं ध्यान रखूंगी. ये रुडोल्फ वर्चो ने जो स्टेटमेंट दी थी वो मॉडिफिकेशन थी सेल थ्योरी की. ओमनी सेलुलर ई सेलुलर व्हिच मींस बेसिक क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, बट ये आना चाहिए. इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द entire quiz today. Very good. All cells arise from pre-existing cells. किसी ने भी गलत नहीं किया. This is second of all my Kahoot. किसी ने भी गलत नहीं किया, सबने सही किया. तो easiest question so far. Smallest cell is, again I believe easiest question. जो हम 5th class से पढ़ते आ रहे हैं. Which is the smallest cell? Hi Anu. ले बेटा, पीपीएलओ आगे भी तो पढ़ना था कि वो यूकैरियोटिक सेल है कि प्रोकैरियोटिक सेल है. पीपीएलओ इज अ माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हम ना अपना ये वीडियो थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा सा ना यहाँ आ लेते, so that there's no दिक्कत with your screen. Okay, let's go. Next. Don't give me Kanish, you did it wrong. Sweet Lord. All right. Largest cell is considered as, अगर smallest cell वो है तो largest cell क्या है? Hi Sakshi. Let's see. ये भी सबको आता ही होगा, I believe. इसमें भी गलत कर दिया तुमने. Largest cell is a ostrich egg. Nerve cell is a longest cell. मतलब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क होता है. जैसे तुम्हारी लॉन्गेस्ट नर्व और लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व. लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व इज ट्राइजेमाइनल. लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व इज वेगस. So there is a difference between large and long. Well, right. Select the option with correct identification of the cell type with one of the feature given. देखो एक्स सेल दिया है, वाई सेल दिया है. आपको आइडेंटिफाई करना है एक्स कौन है, वाई कौन है, और उसके अंदर ये डी ई एफ और एबीसी क्या है. हाय उज्जवल. quickly answer. यार ये जिसने भी सेल वाई इज एन एनिमल सेल किया, ये तुम्हें पिटाई पे पिटाई लगेगी. हाउ कैन सेल वाई बी एन एनिमल सेल? ठीक है, एंड सारे स्ट्रक्चर्स तो प्लांट सेल एनिमल सेल में कॉमन है ही नहीं भैया. प्लांट वाई वाज अ प्लांट सेल, उसमें दिख रहा था अलग से वैक्यूल. वेरी गुड खुशी. चलो, अगर अब हम कंपेयर करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को, आपको बताना है विच फीचर इज इनकरेक्टली डिस्क्राइब फॉर अ प्रोकैरियोटिक सेल. मैंने जो भी फीचर दिया है वो प्रोकैरियोटिक का दिया है. आपको ये बताना है इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक के लिए गलत है. Let's see. Very good. Specially लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल में they are usually smaller and they reproduce faster. The multiplication is faster. Centrioles absent होते हैं because they are eukaryotic cell के cell organelles. भले ही non membrane bound है but they are absent in prokaryotic cell. Ribosome is 70s, छोटी density का होता है. 80s is found in eukaryotes. Feature cell size is small. They are relatively smaller. Yes. Smallest cell is a prokaryotic cell, 0.1 micrometers. Chalo, Kanishk is back in the bank.
Srejan, are no longer downloadable means, can you please telegram me so that I can connect with the tech team and check what is wrong with it? Hmm? Perfect. Cell theory was modified by Rudolf Virchow not in 1839, in 1855. मैंने बोला था ना तुम्हारी लाइफ में 2 ही साल होते हैं, एक 18 साल जब तुम्हें वोट करने की इजाजत होती है पर और कुछ करने की कोई इजाजत नहीं होती. Nobody accepts कि 18 years पे you're going and boozing or you're going and having fun in life. वो अलाउड नहीं है. उसके 5 साल बाद आप सब कर सकते हो. 23 साल है ना. वैसे 55 यू आर अबाउट टू रिटायर, उसके 5 साल बाद आप वेले होते, उसके बाद कुछ भी कर सकते. तो 1855 इज द वे टू रिमेम्बर कि जब लाइफ में चेंजेस आते हैं बट वो फुली एक्सेप्टेड नहीं होते. सेम वे चेंजेस आए पर वो एक्सेप्ट हुए बाय रुडोल्फ वर्चो. वेरी वेरी गुड इवनिंग अनीशा. फिर कनिष्क ने गलत कर दिया. पूरा नहीं स्टेटमेंट पढ़ता कनिष्क, सिर्फ आगे का देखता है, पीछे का नहीं देखता. सृजन आप मेरे को टेलीग्राम करिए बेटा अपना नंबर है ना, हाय बोलिए नंबर से जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है, and I'll get it checked. If that is a problem we can fix it, we'll try to fix it. हाँ राजे. Very good बेटा. lipids are more abundant in a plasma membrane than proteins. It's true. हम बोलते नहीं है लिपिड नॉन पोलर है, इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का नेचर जो है वो नॉन पोलर है. By dominant we don't mean the percentage composition. By dominant we mean because of which we have the dominant property, that is fluidity. Second, mesosomes are found in protestant cells. ये गलत बात है. mesosomes are found in prokaryotic cell, not protestant. तो जिसने प्रो पढ़ा आगे नहीं पढ़ा उसका गलत हो गया. ठीक है, जैसे कि ये बाकी 10, 11 और 24 वालों का सबसे कम सही आंसर दिया है भाई. क्यों भाई क्यों. चलो पीवी, ये हमारी पीवी संधू कौन है. Diagram of a plant cell is given. Select the option with correct identification of the feature given with it. So ये diagram है and you have to talk about what is A, B, C, D. आइडेंटिफिकेशन भी सही होनी चाहिए और उसके साथ की दी हुई जो बात है जिसमें वो इन्वॉल्व है वो भी सही होनी चाहिए. वेरी गुड. देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो स्मूथ नहीं था, पहली बात तो वो रफ था क्योंकि वो न्यूक्लियस के बगल में था. सेकंड, वैक्यूल डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है. और जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रिस्टा नहीं होते, उनके अंदर थाइलाकोइड और ग्राना होते हैं. तो ए इज द प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन जो लिविंग प्लांट सेल्स में होते हैं, जो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं और मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. स्टैटिक बोर्ड. ऑल राइट. What are the membranous folds in bacteria called? Is it mesosome, plasmid, glycocalyx or genophore? तो आपको चारों पता होने चाहिए क्या होते हैं. सिंपल सी बात है, ठीक है कि नहीं. तो लेट्स सी कि परफेक्ट, सबको सब कुछ मालूम है, ये भी किसी ने गलत नहीं किया. वेरी 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 फ्यू स्टूडेंट्स हैव गॉन रॉन्ग विद इट. देखो ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप बेटा, ठीक है. एंड योर प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा जीनोमल और हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA. What is genophore? Can anybody tell me? In a bacteria, it's the other word that we use for the nucleoid. It's the DNA of a prokaryotic cell. ठीक है. Genophore is the word we use for the nucleoid. याद रहेगा. चले आगे. Okay. Next. Very good, Kyra. Next. Incorrect about fluid mosaic model of plasma membrane is. 4 बातें दी है, हमें इनकरेक्ट बात ढूंढनी है.
बेसिकली वो फॉस्फोलिपिड का हेड और टेल के बारे में बात है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात है. Very good. I'm so proud of you all, man. Position of proteins in membranes is static. No, they are not static. They can flip. They can show lateral movements because of the fluidity of the membrane. Basically, the lateral movements of protein gives us a measure of the fluidity of the membrane, which is by the virtue of the lipids. ठीक है, lipids की वजह से. Anisha, we'll do that. You can call me after this session on Telegram. We'll connect. Okay, beta? What is the most dominant component of membrane? Oops, मुझे ऐसा सा लग रहा है कि ऐसा कुछ dominant मैंने अभी explain किया था. Did I? Oh no. Very good. Lipid is the dominant component. मैंने बोला तो था. Dominant does not mean that percentage wise. Dominant means जिसकी वजह से dominant property आती है. Fluidity lipids की वजह से आती है. Okay? Kaira, I hope it's fine now. आप लोगों ने परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर एन आरबीसी एंड इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेल्स. आरबीसी में 55% प्रोटीन और 45% लिपिड होता है. बट बेटा हम ये भी तो कहते हैं ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट 50-40, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द सेल्स. They can percentage composition of RBC membrane is given, but that doesn't make protein dominant. Dominant will still be the lipid. Oops. मुझे बताओ, property of the membrane enables the proteins to move laterally in the membrane, which gives us a measure of it also. Very good. It's the fluidity of the membrane. बेटा permeability का क्या लेना देना है? Protein laterally move करते हैं because of the lipid. Lipid allow them. Lipid provide them the fluidity. It's a measure of the fluidity of the membrane. Incorrect about the cell wall. Cell wall, which is outer to the cell membrane in a plant cell wall, which can be primary, secondary, cell wall, which is freely permeable. It is not differentially permeable. It is freely permeable. वो हर किसी को आने जाने देती है. मेनली इसमें सेलुलोज हेमीसेलुलोज होता है और भी थिकनिंग्स हो सकती हैं. ये प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल लैमेला में डिफरेंशिएटेड होती है. मेरे को पता नहीं था कि ऑप्शन है, नहीं तो मैं बोलती नहीं. फिर मैं चुप हो गई थी बाद में कि अब मैं आगे बोलूंगी तो फिर मैं आंसर ही बता दूंगी. ऑलराइट, आज तो बहुत बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है. क्या बात है. न्यूक्लियस दिया हुआ है, सेल ऑर्गेनेली दिया हुआ है. आइडेंटिफाई करो कौन है. ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, डी कौन है. जल्दी. वो ओ लिख दिया हुआ है बेटा बाय चांस. वो डी है. ए बी सी डी. क्विक. बेटा जो बी है वो स्टेरॉइड सिंथेसिस थोड़ी करता है. आर तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना. फिर तुम आगे की ऑप्शन पढ़ते हो, पीछे की नहीं पढ़ते. एंड डी वाज नॉट योर गोल्जी. डी वाज योर ट्यूब्यूल्स ऑफ एससीआर. ठीक है. सी इज राइबोसोम जो आर के ऊपर था एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. परफेक्ट. मैक्सिमम ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर. जो गलत वाले हैं प्लीज करेक्ट योरसेल्फ. चलो. In a typical plant cell, number of vacuoles is or are which are dash sized, pushing the nucleus to the periphery. किसकी वजह से न्यूक्लियस पेरीफेरी में चला जाता है? Is it one? Is it many? Is it small? Is it large? Quick.
Very good. It is one large central vacuole. बेटा इसमें तो फुल आउट ऑफ फुल आने चाहिए थे 70 में से 70 लोगों के सही आंसर आने चाहिए थे ये क्यों ये गड़बड़ क्यों हो गई है यार it's very easy we have one large central vacuole okay so now you've got two cell organelles P and Q identify them correctly P कौन है Q कौन है and please make sure that you are judging it correctly because P में बड़ी confusion रहती है कई बार very good P is Golgi not ER एक है जिसने ER भी मार्क करे हैं 14 लोग वो भी है नो बेटा P is Golgi देखो ना एक वेसिकल आ रहा था और एक वेसिकल जा रहा था है ना तो वो आने और जाने वाले वेसिकल वाले स्ट्रक्चर को हम Golgi बोलते हैं and definitely the other one was Q was mitochondria Joy, you lost his streak. अभी भी है, you have a streak, but थोड़ा marks कम. Which cell organelle is not matched with its main function? Main function means जो एक primary function उसका है. सबका एक एक प्राइमरी फंक्शन तुम्हें पता होना ही चाहिए जिससे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को भी से रहता पावर ऑफ द सेल एडीपी सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के लिए भी से किचन ऑफ द सेल फोटोसिंथेसिस ठीक है वैसे ही आरईआर के लिए हम बोलते हैं राइबोसोम होता है प्रोटीन सिंथेसिस एसईआर स्टेरॉइड सिंथेसिस सेंट्रोल सेल डिवीजन सीलिया फ्लैगेला बेसल बॉडी Golgi bodies are responsible for packaging secretion ठीक है they are the modifying packaging secretory unit of the cell they're not the degradation वाले degradation या digesting वाले तो lysosomes होते हैं all right next basic questions है ये इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए सबके सारे सही होने चाहिए kept the quiz very easy and simple because पहला था for rankers 2.0 so I wanted it to be a little easy for them Which of the following cell organelles show continuity with the external plasma membrane? तुम्हें एक hint दूं एक्सटर्नल के साथ भी कॉन्टिन्यूस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी कॉन्टिन्यूस होता है बताओ वो कौन है जिसके दो भाग भी होते हैं बेटा स्पेशली लिखा है एक्सटर्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉन्टिन्यूस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन smooth endoplasmic reticulum is in connection with the external plasma membrane क्या करते हो यार RER is with nuclear membrane how can you go wrong with it external plasma membrane means जो बाहर की तरफ है उसको सेल मेम्ब्रेन ना बोल के एक्सटर्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इंटरनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस इंटरनल कंपार्टमेंट्स इंटरनल सेल ऑर्गेनेल्स That's no problem, Munaza. You still got 15 questions to go. क्या यार कोई बात नहीं pH inside lysosomes is we know lysosomes are those vesicles which are given birth by Golgi. These are membrane bound vesicles which contain proteins which are synthesized by ER. They are modified by Golgi, packed by Golgi, and hence we say that Golgi is the mother of lysosomes, which has proteins which are enzymes that are hydrolytic enzymes which break down stuff in presence of water in acidic pH. Very good. एसिडिक भी बिल्कुल बहुत ज्यादा वाला एसिडिक होता है 6.8 वाला एसिडिक नहीं होता ये सारे ही स्ट्रीक वाले हैं जॉय भी दीपाली भी वर्षा भी अभिषेक भी क्या बात है पीवी बस तुम ही नहीं हो डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का है 1 2 3 4 5 6 लेवल है आपको आइडेंटिफाई करना है सो प्लीज प्लीज लुक एट इट या तो जिसने प्रैक्टिस कर रखे हैं दो आंसर आए हुए हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल उन्होंने चेपी मार दी हुई है यही आंसर होएगा Very good. 1 is outer membrane, 3 was grana, and 6 was stroma, the one which was clearly labeled. Oops. Joy ਤੁਹਾਡੀ streak टूट गई ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿੱਟਾ जी कोई बात नहीं Oxysomes in mitochondria can be observed. I've told you what are oxysomes.
Oxysomes are dash particles which are responsible for dash function in mitochondria, which is the only function of mitochondria. So now you can guess what the answer is. Ujjwal, these questions will come, so we have to practice. अभी तो इसमें multiple statement नहीं आते. Very good, बेटा. ये 21 matrix में क्यों आ गए? Oxysomes are oxidizing. Huh? These are those F0, F1 particles. Oxysomes are racket particles which are found on the inner mitochondrial membrane cristae, which is responsible for ATP synthesis. अभी तो बोला था मैंने. अभी तो बोला था कि ATP is the prime function of mitochondria और hint भी दिया था मैंने. क्या मैं यार? That's okay, but you'll learn with your mistakes. Whoa, 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 Dipali. क्या बात है? चलो. Which of the following is not found in chloroplast? All right. Cisternae are not found in chloroplast. 95% of you gave the correct answer. Cisternae are flattened tubules which have ribosomes on its surface, which are usually a component of RER. Stroma, chlorophyll, thylakoid सब होता है chloroplast में. Cisternae नहीं होते. उसके अंदर thylakoids होते हैं, granum होते हैं, stromal lamellae होते हैं. दो membrane होती है. All right. आज तो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है भाई, मजा आ गया. Matrix of mitochondria is a site for. Matrix में क्या होता है mitochondria के? Mitochondria में होता ही क्या है? मैंने स्पेशली बताया था with respect to ATP synthesis का नाम कि ATP synthesis in mitochondria is called oxidative phosphorylation. Why is it oxidative? Because it is oxidation of food, and that oxidation of food occurs in the form of Krebs cycle in the matrix. Very good. कनिष्क कह रहा है मैं हार नहीं मानूंगा, वापस आऊंगा मैं टॉप पे. Okay, carotenes and xanthophylls are observed in. These are those dash 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 of the cell of plant which provide dash 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 to the plant. And these are dash soluble pigments. They're fat soluble pigments which provide color to the plants, and they're found in the chromoplast, the colorful. Amylo are starch storing, alluro are protein storing, elio are fat storing leucoplasts which are colorless plastids. All right. In Chlamydomonas, chloroplast is dash shape and dash in number. हमने पढ़ा था ना कि क्लोरोप्लास्ट का साइज, शेप और नंबर वेरिएबल होता है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का साइज, शेप, नंबर वेरिएबल होता है इन डिफरेंट सेल्स, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट का भी होता है. तो क्लामाइडोमोनास यू नो ना, किस कैटेगरी में आता है? प्रोटिस्टा में. इट्स अ सिंगल सेल photosynthetic, so it has a cup shaped chloroplast and only one. ठीक है. Many are found in your higher plants. ठीक है. Okay. Multicellular plants. चलो, Dipali is sticking to her position. Let's see last 6 questions. Eukaryotic flagella, जो membrane bound central part है, उसको हम क्या बोलते हैं? Now इस क्वेश्चन के दो मतलब भी हो सकते हैं. It's the membrane bound structure. तो membrane bound तो उसका एक्सोनीम होता है ना, ठीक है, जो हम बोलते हैं कि उसका जो कोर है. Here the central part means the core of the flagella, the filament of the flagella. वो जो membrane bound होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एक्सोनीम बोलते हैं. Statement of NCERT है कि एक्सोनीम shows an array of 9 plus 2 arrangement. But the central sheath membrane नहीं, it's just a protein sheath. It's not membrane. ठीक है, it's a protein sheath जो central sheath है. Whoa, totally upside down. Abhishek, good going. Joy, welcome back.
Oh, Anisha. I'm so sorry, Rajay. In centriole, we know centriole is a non-membrane bound structure which is found in close association with nucleus, gives rise to spindle fibers, basal body of cilia flagella. It is something which has a peripheral arrangement of microtubules 9 plus 0, and these are connected to the central protein hub by radial spokes. So, आपके बाहर के जो triplet tubules है ABC are connected to the protein hub which is present proximally, distally नहीं होता, proximally होता है protein hub in a centriole. एंड इस प्रोटीन हब को हम कैसे कनेक्ट करते हैं ट्रिपलेट से, विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स. और कौन से वाले माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द ट्रिपलेट से कनेक्ट करते हैं, ए से, बी से या सी से? पिन हेड होता है, पिन हेड द एक्स पॉइंट, इट कनेक्ट्स द रेडियल स्पोक टू द protein hub from which tubule, A tubule, B tubule और C tubule, microtubule बोलते हैं हम उनको. कौन सा वाला ट्रिपलेट का माइक्रोट्यूब्यूल रेडियल स्पोक से कनेक्ट होता है टू द सेंट्रल हब, ए, बी और सी? जल्दी बताओ, टिक टिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मीनवाइल लेट्स सी किस किसने इसका आंसर सही दिया है. काफियों ने इसका आंसर सही दिया. कनिष्क, तुम्हारी तो सीढ़ी उतरती चढ़ती जा रही है आज, क्या बात है. कनिष्क, रॉन्ग आंसर. ए माइक्रोट्यूब्यूल. हमने जब ड्रॉ किया था, याद नहीं है, हमने दोबारा ड्रॉ किया था कि ए होता है अंदर की तरफ और ए पे पिन हेड होता है जो रेडियल स्पोक से कनेक्ट होता है. बेटा प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ समथिंग. ठीक है, डिस्टल का मतलब होता है दूर. रॉन्ग आंसर मैरी. ट्रू ड्रीम. कनिष्क, ए माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा होता है रेडियल स्पोक. ए से, ए से, ए अंदर, बी बाहर, सी और भी बाहर. डायग्राम याद करो. A microtubule. Centrioles are closely related with all of the following except very good. Cilia, flagella, spindle fiber. अभी तो बताया था मैंने. उफ, गोल्जी से नहीं होता. गोल्जी, ER, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, फॉर्म्स द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. चलो. During interphase, what is the genetic material inside the nucleus? What's the shape of it? मैंने दो shapes बताई थी, एक इंटरफेस और एक जब इंटरफेस नहीं होता तब वाला. Very good. In the form of thread chromatin material, which is made up of DNA, RNA, histone, non-histone, when it forms euchromatin and heterochromatin. Dipali is not leaving her position, man. But Kanishk is also not letting it go. Varsha, up static to your position, and I'm so happy about it. And I hope you are also happy about no garbar today. What is incorrect about nucleolus? It is a membraneless cell organelle. True. It's membraneless. It can have more than one. It is highly likely that when we have certain cells which are actively involved in protein synthesis, which is done by ribosomes, which is made up of rRNA, and rRNA is what is synthesized by nucleolus, which is found inside the nucleus. तो सारी बातें सही थी except blue. It does not synthesize mRNA, darling. It synthesizes rRNA, forms subunits of ribosomes. Ribosomes which form proteins. That's why they are more in number in the cells which are actively involved in protein synthesis. Breathless. Let's go forward. Woohoo!
Kanishk, Varsha, Joy, PV, constant in my scoreboard. Second last question. Krisha, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते क्विज कब होगा. So if you are a member of the Uran Rapid Revision Telegram channel, you will get updates on when the quiz is going to happen. And we do upload certain questions in the form of quiz every day on the Telegram app also on our channel. तो आप वहां पे देख सकते हो राजे. Very good. Non-staining part of chromosome distal to secondary constriction. बताया था एक primary constriction होती है जिसको centromere बोलते हैं. एक secondary constriction होती है जिसके beyond आपके पास repetitive DNA होता है जिसको क्या बोलते हैं? Satellite. Last and final, the one who decides the winner for the today's Kahoot goes live. थोड़ा fact based रखा है मैंने. Let's see who all will be able to answer. वेरी गुड बेटा. माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के दो ही की तो साइज हमने पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया छोटा होता है, डिफिकल्ट टू स्टेन होता है, क्लोरोप्लास्ट बड़ा होता है और बहुत ज्यादा बड़ा होता है. तो दिस इज माइक्रोमीटर होना चाहिए था यहाँ पे mm की बजाय, बट देन ए एंड लेट्स सी. वेल डन वर्षा, kudos. कनिष्क 28 ही सही किया बस. See, Kahoot is more about quick timing, but I would appreciate if you would have answered more correct. 6 wrong, 7 wrong is so much wrong. Varsha, way to go, baby. Only 4 wrong. Wonderful. I want you to have all rights. Please, no negatives. No negatives. Time management is important, but negative management is even more important. Huh? तो जितना टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है उतना ही नेगेटिव भी नहीं करना है. प्लीज पॉजिटिव में स्कोर लाना है, नेगेटिव में स्कोर नहीं लाना है. यू गेट माय पॉइंट राजे? तो प्लीज टाइमिंग क्विज के लिए तो अच्छी है, बट तुम्हारे नीट के लिए अच्छी नहीं रहेगी ये. तुम अगर गड़बड़ कर दोगे ऐसे तो फिर कैसे चलेगा? यू डोंट हैव टू गो रॉन्ग. यू कांट गो रॉन्ग विद द क्वेश्चन. उसको जल्दी मार्क करने के चक्कर में अगर तुम गलत कर दोगे तो फिर पर्पस ही हमारा डिफीट हो जाएगा ना क्विज करने का. Quiz was to help you learn time management with correct answers, not time management with wrong answers. No. Kanish, next time less wrongs please. Okay? Khushi, less wrongs please. Dipali, sorry. Varsha, good. भले ही तुम्हारा थर्ड पोजीशन आया हो, but still more rights. And the fourth and the fifth position people also. Good. Very good, Bhagwati. Okay, point taken. Kritika, next time labeling questions थोड़े और zoomed in वाला फोटो लूंगी. देखो क्वेश्चन छोड़ो या क्वेश्चन गलत करो, पॉइंट इज आपका सही तो नहीं हुआ ना. हमें तो सही करना है ना, तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. क्वेश्चन छोड़ना डज नॉट सॉल्व द पर्पस. टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, तुम्हें फॉरवर्ड करूं? अब भी करते हो. 1 2 3 4 and this goes result to the group.
कौन कौन से ग्रुप में डालना है इसको हमें? यार ये चीजें ना मुझे तुम बता दिया करो, मैं ना भूल जाती होती हूँ ना। I'm an aging lady man. Go to Telegram, लाइव चैट ग्रुप को तो, और डन 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 डन। Babies, your result has been shared to your Telegram group of live chat of your biology doubt. Ujjwal, wherever we get stuck is where we have to work. Simple. देखो नेटवर्क तो थोड़ा इश्यू हो सकता है, बट कोई बात नहीं, nonetheless we can always try to have a better network. Notes have been sent from my side. Let's see, you haven't received it. We'll get it sent. और बोलो, शिकायत पेटी कुछ है तो हम पूरा कर दिए देते हैं अभी के अभी। शिकायतों का पेटा मैंने तो सेंड कर दिए थे बेटा, आगे आपके पास आए नहीं तो कोई बात नहीं, भेज दिए अभी। वर्षा, आई एम सो सॉरी, मैंने तो उसी टाइम भेज दिया था यार, बट कोई बात नहीं। कुछ अभी आ गया, चेक नोट्स भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया, और कुछ चाहिए? आज मैं शेरा वाले माता मोड में, तुम जो मांगोगे माता रानी की जय तुम्हें मिल जाए। और कुछ चाहिए है? मांग लो, 2 विशेष पूरी होगी, तीसरी रह गई है। So you have the third wish pending. You can ask for what you want, you'll get it. Tick one, but 10 seconds का ही time है बस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 time up. Sorry, अब कुछ नहीं मिलेगा, wishes का time over हो गया। ओके भगवती, शिकायतों का पिटारा पेटा नहीं। मैं हिंदी सीख और अच्छी बेटर कर रही हूँ, सीख नहीं रही, मुझे आती है हिंदी, मेरी मातृभाषा है। I'm just brushing it up, you know. Okay, Ritika. Bhagwati, most welcome. Kanish, result share, darling. UITS का schedule. Unit test पूरा. Okay. All on my fingertips will do that. Chale. So on that note, I'm going to bid you goodbye. We are going to discuss this. अब क्योंकि result आ गया है, तुम अपना tally कर लो, check कर लो, and I'm going to discuss live my paper on Tuesday, day after tomorrow. Tomorrow I'm a little backed up, so day after tomorrow I will share the timings जो सुधीर सर के साथ clash नहीं हो आपका class का, and we'll discuss. Okay? चले. Thank you so much for coming in, darlings. Hasta la vista. We'll keep having more quizzes for you. Stay connected. Spread the word, man. है ना? Share with more people so that you have more competition. जितने लोगों के बीच में compete करोगे, उतना ज़्यादा पता लगेगा कि where you stand. All right, Kritika. Point taken. I'll work on it. Bye.